that is yesterday we studied about last class we studied about that when the light passes through a polarizer, an unpolarized beam of light passes through a polarizer, its intensity decreases to half. अगर I naught है तो वो कितनी हो जाती है? I naught by 2. Then we studied about the polarizer and then analyzer. We studied about the angle between the polarizer और analyzer. कैसे effect होता है? Right? If there is a polarizer, we have unpolarized beam of light. Which when passed through a polarizer, it becomes a plane polarized beam in which the vibrations of electric field are parallel to the path axis. After this, if we use an analyzer, then the angle between the path axis of the polarizer and the analyzer, I repeat, the angle between the path axis of polarizer and analyzer will determine कि एनालाइजर से जो लाइट निकलेगी उसका इंटेंसिटी क्या है. अगर 0 डिग्री था, याद है, अगर इंटेंसिटी 0 डिग्री था तो इंटेंसिटी रिमेन्स सेम. अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो इंटेंसिटी बिकम्स 0. अगर कोई और एंगल था तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? I naught cos square theta. अब आज हम इस पे बात करेंगे. I naught cos square theta. ठीक है? And here comes the role of the law of Malus. Here comes the role of law of Malus. ठीक है? Malus's law. Malus's law. It states that the intensity of light passing through the analyzer is square of the cosine of the angle between polarizer and analyzer. Square of the cosine of the angle between polarizer and the analyzer, bracket में लिख लो path axis. Path axis के बीच में जो एंगल होगा उस पे. Okay, now how this process is followed? अब देखो, ये polarizer था, ये है polarizer का path axis. मान लो एनालाइजर कुछ ऐसा रखा हुआ है. Suppose analyzer is kept somewhat like this. Say the path axis of this one is inclined at an angle of theta to this one. ठीक है, तो मैं क्या इसको इन वेक्टर ऐसे बना सकता हूं, बराबर. ये at an angle theta inclined है, तो ये path axis को at an angle theta ऐसे बना सकता हूं. ठीक है, यस. अच्छा मान लो यहां इंटेंसिटी ये है, ये जो यहां से पास हो रही है उसका एम्पलीट्यूड है, सॉरी नॉट इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड है. तो अगर इसका एम्पलीट्यूड a है तो बेटा इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? a cos थीटा. यस और नो? अच्छा, अगली चीज, we know that what is the relation between intensity and amplitude? I is equals to
के स्क्वायर, तो वहां से भी इंटेंसिटी पास हो रही होगी, कैन आई टर्म इट टू बी I इज इक्वल्स टू K, और K कितना आया है, A cos theta का होल स्क्वायर, कैन आई राइट इट एज I इज इक्वल्स टू K A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यस। अच्छा K A क्या था, K A स्क्वायर, जो यहां से इंटेंसिटी जा रही थी I नॉट, initial intensity, that will be Ka square, initial amplitude. So I can say Ka square is I naught. So I can say I is equals to I naught cos square theta. I is equals to I naught cos square theta. Is it okay? आ गया समझ में? ठीक है, तो if you have polarizer and analyzer whose path axis is inclined at an angle of theta, तो तुम सीधे Malus law यूज करोगे, you will be able to get it. Fine. Let's move ahead. Let's come on to one more law, that is Brewster's law. Brewster's law. ठीक है, now before going ahead with Brewster's law, you understand the term polarization by reflection. Polarization by reflection. हुआ क्या इसमें, लिख लो, polarization by reflection में लिखो, when an unpolarized beam of light, when an unpolarized beam of light is incident on a transparent medium, is incident on a transparent medium, अच्छा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो कंप्लीटली रिफ्रैक्ट होगी कि कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगी, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, पानी है, पॉन्ड है, नदी है, और तुम नदी के सामने ऐसे खड़े देख रहे हो, तो रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन की दोनों है। अच्छा नीचे जो आदमी खड़ा है पानी के अंदर, उसको तुम दिखोगे कि नहीं दिखोगे, दिखोगे कि नहीं, दिखोगे ना, अब तुमको तुम्हारा चेहरा भी दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, ठीक है, दोनों हो रहा है। तो when a beam of unpolarized light is incident on a transparent medium, then it is partially refracted and partially reflected. It is partially refracted and partially reflected. Full stop. The part which is reflected, the part which is reflected is partially polarized. The part which is reflected is partially polarized. However, the refracted part remains unpolarized. The refracted part remains unpolarized. ठीक है, आते हुआ कि ट्रांसपेरेंट मीडियम, suppose this is the transparent medium, let us take it to be glass of water, and we have a beam of unpolarized light striking on the surface, ठीक है, unpolarized है, that means उसमें अंदर भी, बाहर भी, इधर भी, उधर भी, सारे डायरेक्शन में मैं दो ही ले रहा हूं, ठीक है, तुम्हारी बुक में भी सेम डायग्राम है।
ठीक है। So an unpolarized beam of light is incident, ये unpolarized है, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश, unpolarized beam of light पड़ी, तो यहां से कुछ लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जाती है, और जो रिफ्रैक्ट हो रही है दैट इज अनपोलराइज्ड, दैट इज अनपोलराइज्ड, और कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है which is partially polarized, which is partially polarized, which is partially polarized. क्लियर हुई बात? बट अपने को कैसी चाहिए पीपी, अपने को कैसी चाहिए पीपी, बोले तो प्लेन पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड तो है, पार्शियली पोलराइज्ड तो है, कुछ हिस्सा पोलराइज हो गया है, सारा नहीं हुआ, ठीक है ना, सारा नहीं हुआ, अभी कुछ मैक्सिमम हिस्सा जो है वो अंदर बाहर करता है, बट एक दो हिस्से कुछ ऐसे हैं जो ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो कंप्लीटली नहीं हुआ, ये पार्शियली पोलराइज्ड है, बट अपने को कैसी चाहिए, ये पार्शियली है, बट अपने को कैसी चाहिए, प्लेन पोलराइज्ड, कैसी चाहिए, प्लेन पोलराइज्ड। वहां पे आता है खेल ब्रूस्टर्स लॉ का, वहां पे आता है खेल ब्रूस्टर्स लॉ का, क्या कहता है ब्रूस्टर्स लॉ, लिख, for a particular angle of incidence, for a particular angle of incidence of the unpolarized light, of the unpolarized light, the angle between the reflected ray and the refracted ray, the angle between the reflected ray and the refracted ray becomes 90 degrees, and at this angle of incidence, the reflected light is completely polarized, the reflected light is completely polarized, ठीक है, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार बना के लिख लो, that means that the polarization depends upon the angle of incidence, the polarization depends upon the angle of incidence, भाई क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से ही पोलराइजेशन हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखो, ठीक है, पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब हुआ क्या, तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते रहे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आया जहां पे ये लाइट क्या हो गई, completely plane polarized, but at that angle of incidence, polarizing angle IP, the angle between refracted ray and the reflected ray became 90। अब गौर से देखो, ये IP है, तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा, ठीक है, ये एंगल है RP, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, फाइंड आउट एंगल RP in terms of IP, the IP plus 90 plus RP is equal to 1, तो RP कितना आया देखो, 90 minus IP, we know refractive index mu is equals to sin I by sin R, so mu is equals to sin IP divided by sin RP कितना है, 90 minus IP,
90 sin 90 माइनस IP क्या हो जाएगा? cos IP। तो म्यू कितना हो गया? tan। तो refractive index is tan of the polarizing angle. And this angle of incidence IP is termed as Brewster's angle. This is termed as Brewster's angle. Okay. So we'll end the lecture for the day. So Bharat Mata ki